माफ करना, मैं हिंदी में बात या करूंगा। या मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नहीं आप फिर भी मैं इंग्लिश में कोशिश करूंगा। बताइए। इंग्लिश में पता है बोलिए। कि मेरा हिंदी में एक्सेंट है, साउथ एक्सेंट है, फिर भी मैं कोशिश करके आपको हिंदी में ही बात करूंगा। मैडम जी, सब सब एक्टर्स आ सकते हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा में, द होल ऑफ नेशनल सिनेमा में सब लोग आ सकते हैं, उस पिक्चर्स लेके, हाँ, साउथ में आके प्रमोट करके, डब करके, सब एक्टर्स दे ऑल डू फेनोमिनल। ईच जॉनर में बहुत अच्छे पिक्चर्स करते हैं सब लोग, हम सबको स्वागत करते हैं। आप रीमेक, यू पर्सनली मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में, अब तक नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा, अब तक नहीं किया, और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा ये वीडियो अल्लू अर्जुन जी की हिंदी के ऊपर है। फिलहाल में पुष्पा फिल्म के रिगार्डिंग जो मुंबई में प्रेस मीट रखी गई थी, वहां पे एंकर और साथ ही में मीडिया पर्सन के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए थे, उसके जवाब उन्होंने हिंदी में देने की कोशिश की हुई है। तो इसी वीडियो के थ्रू हम जानने वाले कि उनकी हिंदी कैसी है। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अल्लू अर्जुन जी ने सभी मीडिया पर्सन को वहां पे आने के लिए धन्यवाद और नमस्कार कहा, और उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म का डायलॉग, जो थग्गे देले वाला डायलॉग है, उसको हिंदी में डिलीवर करा, जिसकी वजह से एक बढ़िया सा माहौल क्रिएट हो गया। सज्जाना माझे नमस्कार। पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं। इस डायलॉग को डिलीवर करने के बाद उन्होंने नॉर्थ ऑडियंस को एड्रेस करते हुए काफ़ी सारी बातचीत करी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने जो बॉलीवुड फिल्म से जो हिंदी सिनेमा है उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातचीत की हुई थी कि अगर उनकी फिल्में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में डब होगी तो उनको वो सपोर्ट करेंगे। उन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक डीप बातचीत की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड हिंदी में भी डिलीवर किए हुए थे। First of all, I'd like to thank the audience all over the North for receiving South films and making it so big. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमको बहुत प्यार दिया है सब लोग, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और भी प्यार चाहिए हमको। थैंक यू। आई विल ट्राई टू स्पीक अ लिटिल हिंदी, but there will be definitely a lot of because I'm a Madrasi, there will be a lot of accent, but still I'll try to speak in Hindi if I can. Thank you. Thank you so And much. not just about watching South films in not just about watching South films in the North, we equally also admire Bollywood, Hindi cinema. We've always been admiring it for years, for many many years. We also invite Hindi cinema to dub into our languages and come, and we will be there to support your films also. It is not about South cinema or North cinema, it's about Indian cinema. I think we all will grow together as the biggest cinema in the world in the years to come as Indian cinema. Thank you. और उसके बाद एंकर ने एक सवाल पूछा हुआ था कि ये फिल्म पहली पैन इंडिया फिल्म है उनकी, लेकिन इससे पहले से ही उनका नॉर्थ साइड में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। उनकी जो फिल्में डब होके आती है वो यूट्यूब पे व्यूज़ में धमाका मचा देती है, सैटेलाइट पे काफ़ी सारी अच्छी टीआरपी ले जाती है। तो उसके ऊपर एड्रेस करते हुए कुछ कहिए आप। It's absolutely fortunate to be loved in another language because I did not speak that language, nor did I cater, for that particular language in particular. We were making a Telugu film, and it so happened that that film got dubbed in Hindi, and it was received with amazing love. And as we keep growing now that so many people are watching it, we want to give you the best quality film possible. People are showing so much love from all over, from the north, from above, from other places, even small trickles from overseas. For everybody who's been showing so much love for so many years. भाई और बहनों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इतने प्यार दिया है सब लोग, थैंक यू। मैं भी थैंक यू। और उसके बाद एक मीडिया पर्सन ने अल्लू अर्जुन जी से पूछा कि वो हिंदी सिनेमा को कितना एडमायर करते, वो हिंदी सिनेमा को किस तरह से देखते, साथ ही में उन्होंने अभी तक कितनी फिल्में देखी हुई है। So from childhood, we always watch a lot of obviously because I'm multicultural, multi-language, multicultural person from the south. I was born in Tamil Nadu, raised in Hyderabad.
born and raised in Chennai, and then moved to Hyderabad. So I know Tamil, Telugu. We grew up watching Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada films. And as we entered into films, we also started watching Maratha films, Bengali films, Hindi cinema. Hindi cinema has definitely played a huge impact on us. Like time and again, just like how you always watch movies, even we grew up watching all these movies. So it's a part of our life. And of course, we watch Hindi, all movies. Of course, Hindi cinema. And I personally adore Hindi cinema a lot. और उसके बाद अल्लू अर्जुन जी से और उसके बाद उनसे पूछा गया कि अभी आपने कहा कि बॉलीवुड के स्टार अपनी फिल्मों को लेकर उनकी लैंग्वेजेस में डब कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा बॉलीवुड स्टार है जिनकी वो फिल्म लेकर उनकी लैंग्वेजेस में रीमेक करना चाहेंगे? माफ करना, मैं हिंदी में बात Yeah, करूंगा। yeah, मेरा हिंदी अच्छा नहीं नहीं, है, आप फिर भी मैं English में कोशिश बताइए। करूंगा। English में बोलिए। पता है कि मेरा हिंदी में एक्सेंट है, साउथ एक्सेंट है, फिर भी मैं कोशिश करके आपको हिंदी में ही बात करूंगा। मैडम जी, सब एक्टर्स आ सकते हैं। इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा में, द होल ऑफ नेशनल सिनेमा में, सब लोग आ सकते हैं उस पिक्चर्स लेके, हाँ, साउथ में आके प्रमोट करके, डब करके, सब एक्टर्स दे ऑल डू फेनोमिनल। ईच जॉनर में बहुत अच्छे पिक्चर्स करते हैं सब लोग। हम सबको स्वागत करते हैं। नहीं, आप पर्सनली अगर आपको करना हो तो आप कौन से एक्टर की और कौन सी बॉलीवुड की फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे? रीमेक? यू पर्सनली। मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में। अब तक नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा, अब तक नहीं किया, और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिनसे वो इंस्पायर होते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बढ़िया सा एक आंसर दिया हुआ है। मैडम, मुझे सबसे ज्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर है ना, from so many years. I'll say this in English to be a little more comfortable. It's okay, yeah. I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. Because we've grown up, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, at the age, such a big age also, I keep thinking, even if I get really old, I should still be acting like how gracefully Amitabh ji is doing it. In a way, that's what I keep thinking. If you're 60, 70, 80, you should still you should work as beautifully as Amitabh ji does. और उसके बाद उनसे पूछा गया कि जिस तरह से वो एक बढ़िया एक्टर है, उसी तरह से वो एक बढ़िया डांसर भी है, तो आने वाले समय में क्या वो एक डांस के रिलेटेड कोई पैन इंडिया फिल्म करना चाहेंगे? Honestly, dance genre film, I don't know. I've never thought about it, to be very honest. I've never thought about it. I genuinely think, in my opinion, this is just my opinion, I think dance is more enjoyed when it's a part of the film than it being the whole emotion of the film. For me, because cinema is about emotion. Dance is just a part of entertainment. In certain films, like you said, dance film, dance becomes is the main part of the emotion. But for me, I personally like cinema, the emotion of a cinema, and then small pieces of dance in it. So that's my take. On doing a whole dance film, I personally think I'm not very much for it somewhere. Thank you. Thank you, sir, and best of luck for the release. Thank you. I need a lot of luck. Thank you. और उसके बाद उनसे पूछा गया कि साउथ इंडियन सिनेमा और हिंदी सिनेमा में पहले एक लकीर देखने को मिलती थी जो धीरे धीरे अब ब्लर होती जा रही है, तो उसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए। It's a very wonderful question that you asked, by the way. You should see cinema, how it's running, how the trends have been running in the last 10 years. Like I'm saying, in the 2000s, it's a very clear gap between the South cinema and North cinema. Let's be honest about it. And then if you see the entire 2010s, the bridges, there's been beautiful bridges, thanks to people like Manish ji, who have bridged those gaps. And now everybody's getting familiar with each other's cinema. And I'm telling you, from the next decade onwards, from the 2020s, the lines will be so blurry that it will not matter where it comes from. It is only the content that will matter. There will not be South actors, North actors. It will all be about Indian cinema growing. And I'm telling you, with wonderful platforms that have opened like OTTs, there's so many set of new filmmakers, directors, actors, technicians. This has opened up amazing horizons for us in entertainment industry. And we as Indian
entertainment industry, not just cinema, we as Indian entertainment industry are going to be a very huge or probably the biggest players in the next decade. And I'm very positive as a country we will go up. Absolutely. Thank you. Absolutely. और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपने इससे पहले कुछ इंटरव्यू दिए थे जहां पे आपने बताया था कि वो आने वाले समय में जब भी कोई हिंदी फिल्म करेंगे तो उनकी फिल्मोग्राफी में जो हिंदी फिल्म होने वाली है पहली वो स्पेशल होने वाली है, उसमें कुछ खास बात होगी। तो उसके ऊपर आप ज़रा बताइए कि आपको हिंदी कोई फिल्म ऑफर हुई है, आने वाले समय में कौन सी हिंदी फिल्म करना चाहोगे? Absolutely, I love Hindi cinema. Somehow sometimes I use the word, but I don't like to use that word Bollywood as much as possible because it sounds like second to Hollywood, and हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं. So I like to say it Hindi cinema. So even by habit, sometimes even I say Bollywood, but I keep going. I was like, no, say Hindi cinema. हम किसी से कम नहीं. Coming back to your question, I love Hindi cinema. I love Hindi music. I appreciate them so much. Like, definitely it'll be a great moment in my life to do a straight Hindi film, and it'll be a landmark point of my career, and I want to make the best choice possible. And to just answer what you said, there have been people who ask for films here and there, but nothing very nothing very exciting. So I think slowly, we've been having soft talks, like if we can do something, how is it to mount up something big? Because even the people who are coming, they are also saying that when we have to come to you, we have to come with something solid. So I think once everything falls into place, I think I will try to plan with maybe little help of Allu Arjun Garu if he helps. Just a joking. I think we'll try to come up with something big and make it memorable. Thank you. तो बस गाइज यही वो प्रेस मीट थी जो मुंबई में फिलहाल में रखी गई थी पुष्पा फिल्म के प्रमोशन के रिगार्डिंग, जहां पे अल्लू अर्जुन जी ने हिंदी में बातचीत करने की कोशिश की हुई थी। तो आपको उनकी ये हिंदी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।